Hello everyone, I am Tulsidas Patil with my friend Prathamesh Barbe welcomes you all to Engineering Tunes where Engineering Medicine. And right now I am very much excited and happy to introduce you all about your new course, that is nothing but the data structure course. But I believe you have already seen our prerequisite course. If not, don't worry, the course is free. Go and watch our prerequisite course first, because that course contains the prerequisite video which are required to understand the concept of data structure. And now we are going to see how we are going to understand the concept of data structure. So, data structure. There are n number of data structures are available, and each data structure is having its own advantage and disadvantage. So, to make very nice and perfect software, you have to choose these data structures very appropriately. Or to choose data structure very appropriately, you have to understand all these things. And for this, first of all, we are going to understand the introduction और द कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. सबसे पहले एक डेटा स्ट्रक्चर लेंगे, उसका कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ लेंगे. वंस वी आर वेल वर्स्ड विद दिस कंसेप्ट, देन वी आर गोइंग टू सी इट्स स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन. That is how computer allocates the memory for this particular data structure. Memory कितनी allocate होती है, कब allocate की जाती है, all these things that we are going to study in the storage representation part. So that अपने को पता चल जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है और कंप्यूटर में जाने के बाद वो उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. That means how elements are stored in this particular data structure. If you understand all this part, next thing we are going to see operation associated with that data structure. And each operation has a specific algorithm. Based on this algorithm, we are going to solve certain problems. So example solve करने के बाद अपने को algorithm अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. And once we are well versed with examples, algorithm, then we will see how to code for this particular data structure and the operation. So data structure का concept आ गया, storage representation आ गया, and we are able to write the program for this particular data structure. अब इतनी सारी चीजें समझ में आ जाने के बाद lastly we are going to see the real world application of that data structure and we will develop certain mini projects. Okay, so this is how we are going to understand the data structure. और किसी को भी डेटा स्ट्रक्चर समझने के लिए ये सारी चीजें समझना द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं एंड दे आर क्लेमिंग दैट दे नो द डेटा स्ट्रक्चर, एंड व्हेन इंटरव्यूअर आस्क देम कि बताओ मुझे स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तुम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चूज करोगे, देन देयर विल बी नो आंसर. ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, you are in the second year and from this stage your programming journey will start, and it is very nicely said that if you start your journey in the correct way then you are one step closer to your aim. नहीं तो फिर वही होगा. हमने ढेर सारे बच्चे देखे हैं जो फाइनल ईयर में जाके डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. क्यों? बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज प्लेसमेंट इज कंसर्न, हायर स्टडीज इज कंसर्न. ओके, हमने प्लेसमेंट भी देखा है, आई हैव क्लियर द ग्रेड एग्जाम, हमने पीजी भी किया, एवरीथिंग सब जगह पे डेटा स्ट्रक्चर ही की रोल प्ले करता है. ओके, सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर प्लेसमेंट you have to understand data structure. If you are planning for higher studies, you have to understand data structure. So फाइनल ईयर में जाके या पास आउट हो जाने के बाद पढ़ने से अच्छा है अभी पढ़ लो, और वो इस तरीके से पढ़ना है. ओके, and we have taken utmost care to teach you the complex concept of data structure. Yes, data structure में कुछ concept complex है तो है, but we have taken utmost care to make this concept so much simple for you so that you will understand the concept and make the application for that also. So start the journey of programming with Engineering Tunes right now, right here. And if you are having any doubt, use our discussion section at here. And if you are having any suggestion for this course, use the let's talk at engineeringtunes.com. So thanks for joining Engineering Tunes where engineering medicine.